Hello and अस्सलाम वालेकुम, welcome to my channel. I am Mustafa Ali Najafi aka DSLR वाले भाई और long awaited review Mavic 2 Zoom का it is here. और आज not only that we will be reviewing the product, we will be comparing it with Mavic Pro Original और इसके कुछ हम comparison shots भी आपको दिखाएंगे so that you have a better idea. Starting off with the most obvious thing that you see in this drone, or there are thousands of reviews on YouTube. You might have seen a few, और उसमें उन्होंने बातें की हुई हैं जिसमें joystick का उन्होंने बताया हुआ है कि these are removable like the Mavic Air. There are 8 sensors in the drone. They have added 31 minutes flight time. इसके अलावा जो चीज़ें मैं mention करना चाहता हूँ that are missing in other videos, hyperlapse first of all. एंड हाइपर लाइट फीचर, इन दो के बारे में बात करूँगा. हाइपर लैप्स आईफोन यूज़र्स दे आर फेमिलियर विद इट, और कुछ लोग पहले भी ड्रोन से हाइपर लैप्सेस बनाते रहे हैं, DSLR से बनाते रहे हैं, बट दैट टेक्निक इज़ वेरी टाइम टेकिंग in terms of you have to take several photos and then you have to stitch them and stabilize them. But the good feature about Mavic 2 Zoom or Mavic 2 Pro is that ये built in है, खुद ही stitch करता है, and it gives you the final product as a one video, or you can simply directly upload it from your phone. और बहुत simple उन्होंने ये कर दिया. Second is hyper light. It is basically long exposures. जो लॉन्ग एक्सपोजर सेटिंग्स से वाकिफ़ नहीं हैं या प्रो मोड पे या मैनुअल मोड पे ड्रोन नहीं उड़ाना पसंद करते, उनके लिए ये काम बहुत आसान हो गया है. सिंपली आप एक टैप करते हैं, यू गो टू द हाइपर लाइट मोड एंड यू सिंपली टेक अ पिक्चर, और आपको कोई सेटिंग से नहीं खेलना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, एंड इट टेक्स अ वेरी गुड इमेज. फिर जैसा कि मैंने बताया कि 8 सेंसर्स, देयर आर फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, so you feel a lot more secure flying the drone. But when it comes to confined spaces, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसके सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं. ऑब्वियसली द ड्रोन स्टॉप्स या फिर आपको कॉन्स्टेंटली वार्निंग दे रहा होता है. तो फॉर द बिगिनर्स इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. यू फील क्वाइट सेफ और आपको यू आर क्वाइट रिलैक्स. ऑब्वियसली पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ऊपर नीचे कहीं भी आप ड्रोन को लेके जा रहे हैं, तो अगर कोई ऑब्स्टिकल आएगा तो इट विल वार्न यू, इट विल डिटेक्ट इट. एक्टिव ट्रैक मैंने कभी पहले भी ड्रोन्स में यूज़ नहीं किया, अभी भी आई डोंट थिंक सो दैट आई यूज़ इट. एक्टिव ट्रैक के दौरान इसके सेंसर्स और एफिशिएंट हो जाते हैं और ऑब्स्टिकल को अवॉइड करते हैं वाइल मेंटेनिंग इट्स पैथ. तो इट माइट बी अ नाइस फीचर फॉर यू, बट मैं ना रनिंग करता हूँ ना साइकिलिंग करता हूँ, तो आई डोंट थिंक सो दैट आई विल बी एवर यूजिंग दिस, बट यू नेवर नो. एक चीज़ जो मुझे Mavic Pro ओरिजिनल के दौर से बहुत पसंद थी, और इसमें भी वो फीचर है, और उसके अलावा एक एडिशनल फीचर है विच इज़ टैप टू टिल्ट एंड टैप टू पैन. बेसिकली व्हेन you're flying the drone and you tap and hold on your screen, तो आपका जो स्क्रीन है वो एक्टिवेट हो जाता है, एंड इफ़ यू स्लाइड योर फिंगर अप एंड डाउन तो आपका जो गिम्बल है बेसिकली या कैमरा जो है वो टिल्ट अप और डाउन होगा, एज यू कैन सी इन दिस वीडियो. दे हैव एडेड द सेम फीचर इन Mavic 2 Zoom but enhanced it at the same time. Now not only that you can tilt up and down but pan left and right. Simultaneously you can tilt and pan at the same time, which gives you a lot of more dynamic in filmmaking, and it helps you a lot. क्योंकि रिमोट के थ्रू जब आप इन जॉयस्टिक्स और इन शटर जो भी रिंग्स के साथ आप कर रहे होते तो एट टाइम्स इट कांट बी दैट प्रिसाइज, लेकिन विद योर फिंगर्स ऑन योर स्क्रीन यू कैन बी सुपर प्रिसाइज, और स्लो मूवमेंट्स और स्मूथ मूवमेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है. In terms of camera quality, both of the cameras are exactly similar, but what we saw from the test shots and test videos आपने जो देखी हैं, you can see that there's a slight difference in dynamic range. Mavic 2 Zoom, obviously a new camera, they have added the higher dynamic range in this camera, but in terms of build quality and in numbers or on paper, both cameras are absolutely same. This has the zoom feature which goes to 24 to 48 mm, but on 4K अगर आप 1080 पे हैं
तो ये 96 mm तक जाता है, which is very useful like for me. I like this feature a lot क्योंकि आपका जो पर्सपेक्टिव 96 mm या 48 mm पर आता है, इट इज़ नॉट द सेम कि आप ड्रोन को करीब लेकर जाएं. बहुत से लोग ये सोच रहे होते हैं कि जूम का कोई इतना फ़ायदा नहीं है क्योंकि अगर आप जूम कर रहे हैं तो उसकी जगह आप ड्रोन को करीब लेके जा रहे हैं. नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ड्रोन को करीब लेके जा रहे हैं तो यू आर टेकिंग मोर रिस्क. ये तो एक बात ऑब्वियस है. दूसरी बात ये है कि आपका वो सेम पर्सपेक्टिव कभी भी नहीं बनेगा. जो पैरालेक्स इफेक्ट है, जो हॉलीवुड मूवीज़ में भी आप यूजुअली देखते हैं, म्यूज़िक वीडियोस में भी आप लोग यूजुअली देखते हैं, वो इफेक्ट आपको जूम से ही मिलेगा. और उसके कुछ शॉट्स, टेस्ट शॉट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं जो कि आपको इन शॉट्स में वाज़ेह हो रहा है. तारीफ़ों के साथ साथ कुछ इसमें ऑब्वियसली खामियां भी हैं और कुछ ऐसी DJI ने स्टेप्स लिए हैं जो कि मुझे पर्सनली नहीं पसंद. और बहुत से YouTube वीडियोस में और रिव्यूज़ में इसका जिक्र नहीं हुआ, विच इज़ वाई आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि इसके बारे में मुझे ड्रोन लेने से पहले इंफॉर्मेशन या इसके बारे में मालूमात नहीं थी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द मोस्ट एनोइंग पार्ट कि यहाँ पर Mavic Pro ओरिजिनल में दिस वाज यूज्ड फॉर द शटर. आपने शटर ऊपर नीचे करना है, शटर स्पीड कैमरे की चेंज करनी है. तो दिस रिंग वाज यूज्ड लाइक एनी DSLR कैमरा. नाउ दिस रिंग इज यूज्ड फॉर zooming in and zooming out, but you cannot change the shutter speed through the remote, but you have to touch on your phone, go to the menu, go to the settings and change the shutter speed from there, which is quite annoying when you are flying in such situations कि आपको लाइट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, सनलाइट पड़ रही है, शेडोज़ आ रहे हैं, तो आपको कॉन्स्टेंटली चेंज करना है एंड यू डोंट हैव द एंटी फिल्टर्स. तो आपको जब उस तरह की सिचुएशन में अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आपके लिए एट टाइम्स इट गेट्स लॉट अनोइंग. बट एट द सेम टाइम आई थिंक आई विल गेट यूज्ड टू इट. बट दिस इज़ अ ड्रॉबैक कि यहाँ पर इन्होंने इसको चेंज कर दिया. जब मैंने रिव्यूज़ में देखा और लोग इस चीज़ को मेंशन कर रहे थे तो आई ऑलवेज थॉट कि दिस इज़ something new that they added right below the remote. This is I never thought that they actually replaced it. So this was a drawback for me. The second thing कि Mavic Pro original के अंदर जो था आपके पास portrait mode था, which I think was added for the first time in any drone, and this was a very amazing feature for especially for Instagrammers or even Facebook and stuff, where you were able to capture the same videos and images but in portrait mode, and it gave you another perspective, a new dynamics, and it was really cool. Having a look at the gimbal initially, I thought that this feature will be added because it was so popular amongst the Instagrammers and whatever, but they for some reason removed it. I think this can be still added through an update, and I really hope that DJI brings this back in one of the updates soon, inshallah. But at the end, here are the two drones. Look quite similar, everything's quite similar, but these additional features, the zoom and sensors and all that, if you are into it, you should buy this. And if you are going for the quality and everything, and 1-inch sensor, low light में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसके बारे में आपने रिव्यूज़, you can watch that on other channels. लेकिन if you are under a budget and you want new perspective, better camera, better flight time, so you should go for the Mavic Zoom. If you have any questions regarding these two drones that you want to know and you are not able to find in any other reviews, you can let me know in the comments and I'll try my best to answer them as soon as possible. And if needed be, I'll make another review video for you. Until then, enjoy a few of the drone shots that I took and some pictures, and I'll meet you until next time in another video. Make sure that you like and subscribe for further updates. Until then,